Assalamualaikum. It's me, Ishfaq Ahmed, roll number L20EL07. Today I will present you some question answers about advanced electrical machine that are related to the chapter number 2 of advanced electrical machine. Question number 1 is the turn ratio of transformer the same as the ratio of voltages across the transformer? Why or why not? Answer is yes, it is essentially true. It is observed that the ratio of the voltages of transformer are same as the ratio of turns because flux linkage both the coils in same. टर्न रेशो वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर में हूंदो आहे सेम हूंदो आहे उन जे टर्न्स जो इन जे करे छा जे कारण त जेके कॉइल्स हूंदियूं आहिनि उहे सेम हूंदियूं आहिनि ऐं फ्लक्स जी लिंकेज हूंदियूं आहिनि ॿई ऐं जे वोल्टेज जेके हूंदा आहिनि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूंदा आहिनि नंबर ऑफ टर्न्स जे E इज़ इक्वल टू एन डी फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हिते ई शो थी करे इंड्यूस वोल्टेजिस खे ऐं एन छो करे थी नंबर ऑफ टर्न्स जेके कॉइल्स में आहिनि फ्लक्स छो करे थी मैग्नेटिक फ्लक्स खे ऐं टी शो करे थी टाइम खे जेके सेकेंड्स में आहे। हाणे क्वेश्चन नंबर 2 आहे वाई डज़ द मैग्नेटाइजेशन करंट इम्पोज इन अपर लिमिट ऑन द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर कोर। हिन जो आंसर इहो आहे व्हेन हायर वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू द कोर saturates and the magnetizing current rises to produce an ohmic voltage drop in the coil winding when will eventually burn out। माना जॾहिं असां उनखे वोल्टेज अप्लाई कंदासीं हिकु मैक्सिमम पॉइंट ते ईंदो जिते सेचुरेशन थींदी हुनजी उन खां पोइ असां वोल्टेज वधायूं या घटायूं त उहो वधंदो न उहो सेचुरेट थी वेंदो माना पीक पॉइंट उहा सेचुरेशन हूंदसि। फिगर ये क्वेश्चन नंबर 3 what components compose the excitation current of a transformer? How are they modeled in the transformer equivalent circuit? Answer: the excitation current has two components. Number 1, the core loss current. Number 2, the magnetization current. Because of a real transformer has series impedance within it, that's why excitation current of a transformer in equation are Vp primary voltage divided by ratio is equal to secondary voltage plus R equivalent current plus J equivalent Is. And second equation of voltage regulation is equal to V no load minus V full load divided by V voltage full load multiplied by 100 ऐं इन जो इक्विवेलेंट सर्किट आहे हेड फिगर ॾिनल आहे तव्हां ॾिसी सम्झी सघो था। क्वेश्चन नंबर 4 आहे व्हाट इज द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर? व्हाई इज इट modeled in a transformer equivalent circuit as an inductor? Because LP is equal to LP square VP। इन इक्वेशन तव्हांखे हेठि ॾिनल आहे तव्हां ॾिसी सघो था ऐं फ्लक्स जेकी एक्सटेंड थींदी आहे फ्रॉम द पोल साइड्स दिस फ्लक्स इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अदर साइड देन वेस्टिंग एनर्जी माना इहा जेकी फ्लक्स जेकी आहे पोल्स में हूंदी आहे वेस्टिंग एनर्जी हूंदी आहे तंहिंजे करे फ्लक्स लिंकेज जेकी हूंदी आहे मॉडल कई वेंदी आहे एज़ अ इंडक्टर बिकॉज इट इज़ इन इंडक्टेंस। इन जो सर्किट डायग्राम ॾिनल आहे तव्हां ॾिसी सघो था अॻिते हली। सर्किट ही आहे हिकिड़ी प्राइमरी साइड आहे जेकी एल आई आहे ऐं जेकी आई स्क्वायर आहे उहा सेकेंडरी साइड आहे ऐं फ्लक्स एम जेकी आहे मैग्नेटिक फ्लक्स आहे। इहो इंडक्टेंस ट्रांसफार्मर जो इक्विवेलेंट सर्किट आहे जंहिंमें इंडक्टर शो कयो वियो आहे।
Question number 5 आहे list and describe the types of losses that occur in a transformer. Answer: resistive losses. Resistive losses or I square R losses or copper losses is the power losses in a transformer caused by the resistance of the copper wire used to the making winding. resistive loss के copper losses भी चई वेंदो आहे जेको power losses ट्रांसफार्मर जा cause and resistance खां उनखे resistive losses चइबो आहे ऐं ॿियो resistive loss जो आहे एडी लॉस ॿियो आहे एडी करंट लॉसेस एडी करंट लॉसेस जेका power losses in a transformer or motor due to current induced in the metal part of the system from the changing magnetic field. एडी करंट लॉसेस जेके आहिनि उहे ट्रांसफार्मर या मोटर में करंट जे इंड्यूस थियण खां करे थींदा आहिनि जेके मैग्नेटिक फील्ड खे चेंज कंदा आहिनि. टियों आहे हिस्टेरिक लॉसेस. हिस्टेरिक लॉसेस इज losses caused by the magnetism that remains lags in a material after the magnetization force has been removed. हिस्टेरिक लॉसेस जेके आहिनि जॾहिं की मैग्नेटाइजेशन फील्ड मां रिमूव कई वञे उहे लैगिंग कनि उनखे बाद में जेके लॉसेस अचनि उनखे हिस्टेरिक लॉसेस चइबो आहे. हाणे क्वेश्चन नंबर 6 आहे why does the power factor of a load affect the voltage regulation of a transformer? Answer: the lagging power factor demands more current and it causes more voltage drop in a transformer winding. एक lagging power factor जेको आहे उनखे तमामु घणो करंट जी ज़रूरत हूंदी आहे जंहिंजी वजह खां वोल्टेज ड्रॉप थींदा आहिनि ट्रांसफार्मर जी वाइंडिंग मां. And the load power factor also affect the transformer voltage regulation. ऐं जेको लोड पावर फैक्टर आहे इफेक्ट कंदो आहे ट्रांसफार्मर जी वोल्टेज रेगुलेशन खे. हाणे क्वेश्चन नंबर 7 आहे why does the short circuit test essentially show only I square R losses and not excitation losses in a transformer? Answer: short circuit test only shows I square losses because with the low voltage there is minimal losses in excitation. शॉर्ट सर्किट लॉसेस जेके I square losses इन वजह खां थींदा आहिनि छाजे कारण त उन में लो वोल्टेज हूंदा आहिनि ऐं करंट नेग्लिजिबल हूंदो आहे ऐं लॉसेस जेके आहिनि एक्साइटेशन में तमामु घटि हूंदा आहिनि. एंड दिस स्मॉल लॉसेस इज़ बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स बीइंग वेरी स्मॉल. इहे जेको लॉसेस थींदा आहिनि इन वजह खां थींदा आहिनि छाहे करे त मैग्नेटिक फ्लक्स जेकी हूंदी आहे तमामु घणी घटि हूंदी आहे ऐं करंट बि तमामु घणो घटि. क्वेश्चन नंबर 8 आहे why does the open circuit test essentially show only excitation losses and not I square R losses? Answer: since the no load current is very small, it does not contribute to the copper losses. There is no load on the secondary side. माना त इन खे सेकेंडरी साइड जेकी हूंदी आहे उहा ओपन हूंदी आहे कोई बि इन में करंट न हूंदो आहे तंहिंजे करे इन मां वोल्टेज जेके आहिनि तमामु घणा ड्रॉप थींदा आहिनि. क्वेश्चन नंबर 9 आहे how does the per unit system of measurement eliminate the problem of different voltage levels in a power system? Answer: per unit system provides the value for voltage, current, power, impedance and admittance. The per unit system also makes the calculation easier as all the values are taken in the same unit. First of all, we have to take the base unit. Example: per unit system is equal to actual value in any unit divided by base or reference value in the same unit. माना असां जेको एक्चुअल वैल्यू खणंदासीं असांखे बेस वैल्यू बि साॻी यूनिट में खणो आहे जॾहिं त पर यूनिट सिस्टम जो कोई बि यूनिट न थींदो आहे. Why can auto transformer handle more power than conventional transformer of the same size? Answer: all the power does not travel from primary to secondary, goes through series winding. माना साॻियो ई पावर जेको आहे ट्रेवल प्राइमरी खां सेकेंडरी में साॻी तरीक़े सां न वेंदो आहे उहो सीरीज़ वाइंडिंग में वेंदो आहे. लोकेशन ॾिनल आहे तव्हां ॾिसी सघो था ऐं हिन जी साइज़ जेकी हूंदी आहे कन्वेंशनल साइज़ ट्रांसफार्मर खां तमामु घणी घटि हूंदी आहे. हिन जो इक्विवेलेंट सर्किट हेठि ॾिनल आहे तव्हां ॾिसी सघो था. इक्विवेलेंट सर्किट में साफ़ ज़ाहिर थियल आहे. हाणे क्वेश्चन नंबर 11 आहे what are the transform tapes, why are they used? Answer: transform tapes allow the coil ratio and therefore voltage ratio to be changed. This is used to adjust the output voltage if the input
voltage different from the nominal voltage. ट्रांसफॉर्म टेप जेके आहिनि अलो कंदा आहिनि कोयल रेशो खे, तंहिंजे करे वोल्टेज रेशो चेंज थींदी आहे। माना इहे साईं चवां वोल्टेज रेशो खे चेंज करण जी क्वालिटी रखनि था। इहे वोल्टेज रेशो खे चेंज करण लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि जेके आउटपुट वोल्टेज ऐं इनपुट वोल्टेज खां डिफरेंट हूंदा आहिनि वोल्टेजिस। Question number 25. What are the problems associated with the YY three-phase transform connection? Answer. If the neutral connection is not provided and an unbalanced load is connected, then the phase voltage tend to become severely unbalanced. ने मतलब आहे जहिड़ी करे असां न्यूट्रल कनेक्शन असां प्रोवाइड कंदासीं त अनबैलेंस लोड जेको आहे उहो कनेक्टेड थियल हूंदो त जेके फेस वोल्टेज जेके आहिनि उहे अनबैलेंस थी वेंदा पक सां। देन द स्टार स्टार कनेक्शन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर द अनबैलेंस लोडिंग इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रल कनेक्शन। पोइ स्टार स्टार कनेक्शन में अनबैलेंस लोडिंग खां बग़ैर या अनबैलेंस लोडिंग जी एब्सेंसी में न्यूट्रल कनेक्शन खां सवाइ कमु न थींदो। Question number 13 आहे What is TCUL transformer? Answer. The TCUL stands for tape change under load transform is a transformer that has multiple tapes each at a different turns ratio, allowing for change the voltage reduction from the voltage on the primary side. TCUL जो जेको स्टैंड फॉर कंदो आहे मतिलबु अथसि टेप चेंज अंडर लोड ट्रांसफॉर्म इज़ अ जेको ट्रांसफॉर्म कंदो आहे मल्टीपल टेप्स जेके एट अ टाइम ते डिफरेंट कंदो आहे। माना हिनखे भले करंट हुजेसि पोइ बि टेप खे चेंज करण जी एबिलिटी रखे थो, उनखे टेप चेंज अंडर लोड ट्रांसफॉर्म चइबो आहे, भले केतिरो बि लोड हुजेसि। Question number 14 आहे How can different phase transformation be accomplished using only two transformers? What type of connection can be used? What are the advantages and disadvantages? Answer. There is a technique to do three-phase transformation with the usage of two transformers. The easiest way to transform three-phase voltage into two-phase voltages is with conventional single phase transformer. The first transformer is connected phase to neutral on the primary three phase side and the second transformer is connected between the other two phase on the primary side. तमाम सोलो ट्रांसफार्मर जो थ्री फेज वोल्टेज के ॿिन्स फेज वोल्टेज में चेंज करण जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जी मदद सां थी सघे थो। सिंगल पहिरां असां ट्रांसफार्मर खे कनेक्ट कंदासीं न्यूट्रल साइड प्राइमरी साइड खां, उन खां पोइ सेकंड ट्रांसफार्मर कनेक्ट कंदासीं ॿिनि फेज़ प्राइमरी साइड खां, ऐं फोर फेज़ ट्रांसफार्मर कनेक्शन कंदासीं जॾहिं वाई वाई कनेक्शन हूंदो ऐं वाई वाई डेल्टा कनेक्शन हूंदो या वाई डेल्टा कनेक्शन हूंदो या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हूंदो। इहे इन जा कनेक्शन्स आहिनि। एडवांटेज इन जा आहिनि इनएक्सपेंसिव वन, लाइट वेट अथसि, असेंबली इन द लीस्ट टाइम अथसि, हायर एफिशिएंसी अथसि, ईज़ियर टू इंस्टॉल आहिनि ऐं ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन आहे। इन डिसएडवांटेजिस इहे आहिनि द मोर सफिशिएंट कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट। ॿियो डिसएडवांटेज इहो अथसि कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग जेके इक्विपमेंट जी वजह खां। टियों अथसि रिड्यूस कैपेसिटी अथसि। चौथों अथसि फॉल्ट करेक्शन अथसि। क्वेश्चन नंबर 15 आहे एक्सप्लेन वाई द ओपन ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज लिमिटेड टू द सप्लाइंग 57.7% ऑफ नॉर्मल transform bank load. Answer. Voltage unbalance is less with lower impedance transformer. This is the reason that the power output from the open delta transformer is 57.7. Question number 16 आहे Can a 60 Hz transformer be operated on a 50 Hz system? What action are necessary to enable this operation? Answer आहे No, but if a 60 Hz transformer is to be operated on 50 Hz, it is applied voltage must also be reduced by 1/6 or the peak flux in the core will be too high. 60 Hz ट्रांसफार्मर खे 50 Hz ट्रांसफार्मर ते ऑपरेट नथा करे सघूं, पर हिकिड़ी कंडीशन ते ऑपरेट करे सघूं था। जॾहिं असां 60 Hz खे रिड्यूस कंदासीं
में या उन पीक फ्लक्स जेकी आहे कोर जी हाई रखंदासीं। नंबर 17 हाणे आहे व्हाट हैपन टू अ ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज़ फर्स्ट कनेक्टेड टू अ पावर लाइन। कैन एनीथिंग बी डन टू मिtigate दिस प्रॉब्लम? Answer: it becomes a coil and an electromagnet. This can be overcome by using zero cross relay to power it on or off. Question number 18 है what is potential transform? How is it used? Answer: a potential transform or PT is an instrument transformer which is used for the protection and measurement purpose in the power system. पोटेंशियल ट्रांसफार्म जेको हिकु इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्म आहे जेको यूज़ थींदो आहे प्रोटेक्शन ऐं मेजरमेंट पर्पज़ लाइ पावर सिस्टम में। इट इज़ मेनली यूज़ टू मेजर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम। इहो यूज़ थींदो आहे हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज खे पावर सिस्टम मेजर करण में। हाणे क्वेश्चन नंबर 19 आहे व्हाट इज़ करंट ट्रांसफार्म? हाउ इट इज़ यूज़ड? Answer: a current transformer or CT transformer is a device that is used to measure the current of another circuit. करंट ट्रांसफार्म जेकी डिवाइस आहे जेकी यूज़ थींदी आहे मेजर करंट करण लाइ ॿिए सर्किट जो। CT ट्रांसफार्म आर यूज़ टू वर्ल्ड वाइड टू मॉनिटर हाई वोल्टेज लाइन्स अक्रॉस नेशनल पावर ग्रिड। CT ट्रांसफार्म जेकी यूज़ थींदी आहे दुनिया भर जे हाई वोल्टेज लाइन खे नेशनल ग्रिड स्टेशन खे क्रॉस करण लाइ। हाणे क्वेश्चन नंबर 20 आहे a distribution transformer is rated at 18 kVA 20,000 divided by 480 voltage and 60 Hz. Can this transformer safely support 15 kVA to a 415 voltage load at 50 Hz? Why or why not? Answer: there are three factors that affect this. Number 1, useless. The transformer had adjustable taps on the windings. You need a 17,292 volt per input for a 415 volt output. Number 2, the saturation of the core may become a factor at a lower frequency. If the transformer relies on taps change to get the correct ratio of input and output. You have to be aware of the different voltage to current ratio involved with operating using different tap setting. As a particle output voltage you specified, the current of 415 volt is slightly lower, so it will probably not cause excess heating of the windings. Now question number 21, why does one hear a hum when standing near a large power transformer? Answer: we can hear an audible hum in a transformer because electric current affects its internal structure and cause vibration.